आप देख रहे हैं जी बिजनेस, आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और आज मेरे साथ तान्या भी है और मेहमान है कुछ खास, मिलवाएंगे आपको उनसे। लेकिन सबसे पहले तान्या, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जब स्टार्टअप की बात आती है तो आपके दिमाग में क्या आता है? Young, dynamic, something that's always changing, always innovating. That's what I think when I think of startup. स्टार्टअप्स के बारे में तान्या ये राय रखती है, लेकिन मेरे साथ दो खास मेहमान हैं और मैं आपको बता दूं कि यंग, डायनामिक, न्यू अपॉर्चुनिटीज और साथ ही साथ कस्टमर्स का सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली इंडस्ट्री के दो लोग मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ अंकिता डबाज हैं जो को फाउंडर है फैब फर्निश की, साथ ही साथ फूड पांडा से मेरे साथ को फाउंडर CEO सौरभ कोचर है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, जब सोचा कि फूड पांडा की शुरुआत की जाए, कैसे वो ख्याल आया, क्या पल था वो? देखिए, सबसे पहले हम लोग जब एक खाने के बारे में सोचते हैं तो ऑलवेज यूज टू बी दिस प्रॉब्लम कि क्या खाऊं, एंड यू ऑलवेज नो कि लोग दो एक्सट्रीम्स के बीच में हमेशा रहते हैं। ईदर आई वांट माय कंफर्ट फूड, या तो मम्मी की खिचड़ी चाहिए या फिर दिस बिरयानी फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट दैट आई ऑलवेज लव, or my second thing is that I really want to experiment. Most people have phone numbers in their phone or wherever with the pamphlets for the former, but जब 50% वो जो होता है ना, जब मेरे को आज एक्सपेरिमेंट करना है, we used to have nothing, right? So that is where we started that. Hey, listen, this is an interesting problem to solve. How can we aid discovery and yet allow them to order with ease? You don't have to call. And मुझे बड़ी खिज मचती है जब फोन करके ना समझाना पड़ता है, यहाँ से दाएं, यहाँ से बाएं, ये लेफ्ट, ये राइट, राइट. So those are the things that really came to mind and said, hey, listen, this is problem to solve. And we started 3 years ago going to restaurants, and तब पहला क्वेश्चन हमारे को आता था, ये सब तो ठीक है, इंटरनेट क्या भला है? Yeah, so this is how much we've moved over the last 3 years from actually teaching restaurants, hey listen, ये डब्बा जो है इस पे ऑर्डर भी आ सकता है, ये इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकता है, to today they actually coming forth and saying that hey listen, we understand and I think it's a brilliant opportunity, why don't you list us on food panda? तो क्या सौरभ खाने के शौकीन है इसलिए सोचा कि खाने से रिलेटेड कुछ? मेरी सेहत क्या कहती है? अंकिता, फैब फर्निश जो है वो जिस तरह के प्रोडक्ट्स मैंने ऑनलाइन देखे हैं, फ्रैंकली मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। क्या यही दिमाग में था जब फैब फर्निश की शुरुआत की कि एक लड़की को, एक गृहिणी को, एक माँ को, एक बहन को क्या चाहिए घर में, ऑफिस में, बाहर, कि मेरा आसपास जहाँ मैं रहूँ या मैं जहाँ मैं काम करूँ वो जगह सुंदर लगे, ऐसा कुछ सोचकर शुरुआत की? Well, I think a part of the problem was that, and I hope you don't mind, I'm going to answer in English. Perfectly fine. Yes, a part of the problem was that, but when we started, the market was very virgin. We were filling in a gap. There was clearly a huge gap between, mass to luxury, modern functional designs at affordable prices and a huge variety was not available to customers like you and me online. So we quickly filled that gap with a lot of resources that helped us, do the product discovery piece, teach vendors how to get great quality products online, a huge variety of those products, and obviously create a machinery where we marketed it well to our target users as well. So one part was thinking of that target user, which is the female in the house, taking that decision. But the most important part was actually getting people online to shop for furniture. First question was about adaptability. So when I talk about Fab Furnish 1.0, it's about adaptability. We have built a huge amount of brand equity, pioneering sale of होम फर्निशिंग ऑनलाइन। लेकिन क्या कभी ये नहीं सोचा कि यार अगर मुझे फर्नीचर लेना है जाकर तो मैं देखना चाहूंगी लकड़ी कैसी है, फिनिशिंग कैसा है? कभी लगा कि बिजनेस मॉड्यूल सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आप समझ रही हैं कि फर्नीचर से लेकर मैं घर में डेकोरेटिव पीस क्या रखूं या मैं कर्टन्स कैसे लगाऊं, इसको मैं टच एंड फील बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज के। So a lot of aspects go into it. So you have to understand the offline market. How do people actually shop? There's a discovery process around it. I think of my home as my zen, place I relax. It's a reflective of my personality. I look at a couple of publications, I look at inspiration online, and then over a period of time I decide this is what fits my personality, this is how I want my home to feel and look. So we've helped our customer achieve that by giving them a huge product variety. We have more than 1 lakh SKUs, the kind of products that we're selling. जैसा आपने बोला कि आपने आइडिया से सोच लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि let's get them online. तो आपको क्या लगा कि ये जो मल्टी चैनल आप मॉडल देख रहे हैं बिजनेस का, लाइक
did you think of maybe starting your own retail shops to give them that experience? We've experimented a lot. In fact, if you look at our history, we've had some association where we've got our own brand name showrooms as well. But not in an own model, but yes, showrooms that represent our product. So we've experimented with that in terms of the offline format. But we firmly believe that going forward, it is purely online. It is purely a home product. We don't confuse home with lifestyle or rather fashion. It's purely home. It's purely online. And now Fab Furnish 2.0 is all about inspiration. As I see कि आप पहले website में थे और अब आप mobile में जा रहे हैं, and you have that retail store option obviously, like partnered with that. तो आपको लगता है ये मल्टी चैनल जो आपके हैं, इसमें आपको लगता है कस्टमर्स को ज्यादा वैल्यू फॉर प्रोडक्ट मिलेगी? सौरभ का टेक में पहले जी, सौरभ, what do you think? ये जो आप मोबाइल एप्लीकेशन में भी जा रहे हैं और ये बहुत बिजनेस डिपेंडेंट है, राइट? यू कैन नॉट पेंट एवरीथिंग विद वन ब्रश, एग्जैक्टली, राइट? फॉर फूड it's a very, very personal and emotional subject, right? And you just look for, you don't need the cataloging, the inspirations, etc., right? You just need to be in the right mood. Yeah. Right? And you're probably in the mood 3 times a day, and if you talk about north of India, probably 4 or 5 times a day. And the most personal experience, it's a very, very quick kind of decision. उन सब चीजों में mobile is a fantastic tool, because for your most personal experience, it's the most personal device, right? It might be different for somebody who's doing home products and furniture, because then you need a lot more research. हमारे यहाँ कोई नहीं पूछता कि आपने गोभी कहाँ से तोड़ी, तेल कौन सा लिया, right? So it's a very different involvement of product. आसान बिजनेस चुना। काश मैं कह सकता होता आसान है। जब भूख लगी होती है तो 45 मिनट भी कितने चुपते हैं मेरे से पूछो, right? So what do you think? So yeah, you know, one of the challenges we had when we started this business was buying customer loyalty, trust. Like you said, how do they feel in touch? So we've experimented with all those things. People have come to our stores, held the product. People have dealt with us over a period of time. We've got a lot of repetitive customers. They know about the quality. Now they know Fab Furnish will give them a great quality product. But having said that, what are we going to do in the future? Like I said, I'm going to give my users an offering based on their likes and dislikes, for which they have to discover not just a product but an entire inspiration for what they want their homes to be, and which is why I need to be on mobile, because people are surfing inspiration when they're free. Retail versus e-commerce, मेरे को हमेशा मैं सोचती हूँ कि कैसे आपका competition होता है, जैसे Great Indian Sale हो गई, तो how do you maintain that? ये आपके डिस्काउंट कैसे मेंटेन करते हैं कि आप रिटेल के साथ compete करते हैं कि अगर वहाँ पे 70% ऑफ है, तो how do you make sure your website is also offering some similar discount? So our philosophy is simple. We have to be, better, always better, right? So because obviously the model is a lot different. In all probabilities, actually for us, restaurants also partner with us in providing these discounts, because they understand it's a totally separate channel, जहाँ पे उनका cost of acquisition कुछ भी नहीं, right? So they have that extra margin to share with the customer, and you'll not believe it, but restaurants so actively are willing to share those discounts on our platform. It's made our lives really easier. Second thing is this entire retail versus e-commerce debate. I think one of the reasons you have discounts is to aid the move. Okay, so एक behavior change है जो हम, not only me and Ankita, but all of us together are trying to bring in a mindset shift that, hey, listen, you don't need to step out, you can get it at home. And उस mindset को aid करने के लिए there is discounts, there's a lot of bells and whistles that we attach to it, because at the core of it is the convenience जिसकी आप value नहीं लगा सकते, right? Because you can't put value to convenience, we aid the decision by giving some monetary value to it. But लेकिन अंकिता, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर मैं बात करूं, अगर वो कंज्यूमर्स को मिल जाता है तो और ई कॉमर्स भी उसके दायरे में आता है, जिसके बाद किसी भी कंज्यूमर का जो हक है वो और बढ़ जाता है। उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कंप्लेंट्स तो बहुत सारी आती होंगी, ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारी कंप्लेंट्स। I think that's a huge positive that differentiates me from my competitors, because my service is superlative, right? So I should be able to deal with all those complaints. In fact, if you look at my competition or any of the new startups, my service is so good that I have the least amount of complaints. That differentiates me from someone else. Just like quality would, that's why great service would. So that's great.
I think the consumer should have that tool. व्हाट्स योर टेक ऑन इट? और क्या मैं जो मुझे समझ में आता है थोड़ा बहुत ग्राफ, वो ये कि कोई भी स्टार्टअप या कोई भी ई कॉमर्स बहुत ज्यादा दिल्ली से शुरू नहीं होते हैं। आजू बाजू नोएडा, बैंगलोर, गुड़गांव, यू नो व्हाट्स द रीजन? क्या कोई सेंटर के पास नहीं जाना चाहता या ज्यादा लोग क्रिएटिव नहीं है then आप बोलेंगे? No, I think multiple reasons. One of the two big reasons, frankly, are one talent. कि talent pool आपका कहाँ पे concentrated है, and second is also cost, right? अगर मैं अपना ऑफिस सीपी में लेना चाहता हूँ, it's at least 2 to 3 times as expensive as I take it in Gurgaon, right? So I don't find that to be necessarily bad or reflective of something. I think it's concentration आपकी कहाँ पे ease of business उससे फटाफट हो जाता है। देखो, when you're starting up, yes, there are policies that can impact you, right? But it's really getting out of the door, which is the most important thing. Which means you need the people, you need the technology, you need the core solution, and you need a concentration. तो रेवेन्यू मॉडल को उस हिसाब से संभालने की जरूरत है कि खर्चा बहुत ज्यादा ना करें आप इनिशियल स्टेज पे। ये एक मैसेज है एक तरह से। अंकिता, व्हाट इज योर व्यू ऑन द न्यू लिस्टिंग नॉर्म्स बाय सेबी for the e-commerce? It's a little far-fetched for us at this point because we are not, looking at from an initial public offering perspective. They've made better some norms around profitability, which we know that as an e-commerce industry we're a little away from, right? But we could not list in India because of stringent norms around profitability, etc. So they've made them better. So overall, the direction is right. Okay, so people are taking the right steps, but I think the regulator right now is in a very different position. They do want to ensure that they're safeguarding the norms of the common investor, the retail investor, because that's their job, right? And at the same time, the perception that you carry of volatile. So that volatile perception is obviously far drenched, right? And thereby they're very cautious of opening up the stock markets completely. Yes. So it's a positive step. It's something that will boost the sentiment quite a lot. What I'm not sure about is whether it will take all the e-commerce industry to start listing in India. Probably not right now. We're still far away from that. ब्रेक लेती हूँ, लेकिन उससे पहले सौरभ, जब आप कहीं खाने का मन बनाते हैं तो क्या जाते हैं फूड पांडा से मैं ऑर्डर कर लूँ आज? जब से मैंने फूड पांडा शुरू किया है, मैंने जाना बंद कर दिया, मैंने मंगाना शुरू कर दिया। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी बातचीत जारी रहेगी। आप देखते रहिए जी बिजनेस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और ये बातचीत हमारी लगातार जारी है। तानिया थोड़ी सी नर्वस है, इसलिए तानिया की तरफ से सवाल पहला मैं पूछ लेती हूँ। सौरभ, ये रेवेन्यू मॉडल कैसे काम करता है? क्योंकि आप अनलिमिटेड डिस्काउंट्स देते हैं, जो मैं मार्केट की बात कर रही थी कि मार्केट से अगर मैं कुछ सामान खरीदती हूँ तो मुझे ऑनलाइन वो चीज ज्यादा सस्ती मिलती है। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा याद आती है, तानिया हम बात भी कर रहे थे इस बात की, किस तरह से विजय साहब किंगफिशर को लेकर आए और कैसे वो